ये बाहाई एकेडमी हेडक्वार्टर्स है पंजगिनी में, जो हिल स्टेशन है. और बाहाई एकेडमी in the year 2000, means 22 years ago, that was the first institution in the whole country to start a program called Education in Universal Human Values for colleges and universities. Now, friends, we know most of you are from engineering and science background, and you know Einstein by his very famous, equation E is equal to mc square. Energy equals to mass times the speed of light squared. That you know it by heart. That's the basics of physics. But Einstein was not only a great physicist, although what he said in the last century was ahead of his generation. But he was not just a physicist. Look, let us see what he has further said. He said to organize our common life according to the ethical and moral values is of central importance. ओके सो यहाँ पे आइंस्टाइन जो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, तो वो बताते हैं कि हमारी जो हर रोज की जो जिंदगी है उसको अगर एथिकल और मॉरल वैल्यूज यानी कि जो आध्यात्मिक वैल्यूज से अगर ये हमारे जिंदगी का एक सेंट्रल पार्ट है और उसको हम लोगों को सेंटर में रख के उसका बहुत सारा महत्व है अगर हमें अपनी जिंदगी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करनी है, उस हिसाब से हम ऑर्गेनाइज करना चाहिए. तो human values, ethical values should be at the center of our life. Then he says, here, now see, look at from the mouth of the greatest scientists of the age. Here, no science can save us. तो यहाँ पे बताते हैं कि बहुत सारे ये जो ग्रेट साइंटिस्ट है उनके मुंह से निकली हुई बात है कि हमें कौन सा ही जो विज्ञान है वो हमें बचा नहीं सकता. I believe indeed that overemphasis on the purely intellectual attitude, often directed solely to practical and factual in our education, has led directly to the impairment of ethical values. हमें अपना education, करिकुलम में, एजुकेशन पॉलिसीज में, एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन हमें इतने एम्फेसाइज करता है कि इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड होना चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, बस प्रैक्टिकल साइंस को अप्लाई करना है, बस साइंस 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 इतना हमें एम्फेसाइज किया है जिससे कि ह्यूमन वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज पूरा हमें भूल चुका है. वी हैव फॉरगॉटन. एंड ही सेज दैट values and ethics should be the core of organization of our life. Same thing. When we say our life, it means education, it means our personal life, it means the social life, it means the political life, it means the economic life, it means the environmental, everything. The core should be moral and ethical values. Why? Why is it so? Not because moral, ethical values are something, supernatural. Not that. Because moral values, spiritual values are the principles of operation of the universe. पूरी दुनिया जो है, क्रिएशन जो है, वो कौन से वैल्यूज के, कौन से तत्व के हिसाब से ऑपरेट करता है? सेम तत्व है ह्यूमन वैल्यूज, सेम प्रिंसिपल है एथिकल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज. इट इज द सेम. सपोज एक सोशल वैल्यू है ट्रस्ट, कोऑपरेशन, ट्रूथफुलनेस. आप नेचर में देखिए, निसर्ग में देखिए, ये सब चीजें दिखता है क्या नहीं? Is there truthfulness in nature? Of course. Is there honesty in nature? Of course. The apple tree gives apple, does not cheat you and gives you banana. It doesn't happen, no? You can trust when you plow the land, you sow some seeds, you can trust the land.
If everything else is good, the land will give you the yield. Cooperation. The whole universe is based on cooperation. The soil cooperates with the tree. So tree stands on the soil. The soil gives minerals, gives water. The tree takes it, bear fruits, bear leaves, and throws it down to the soil. Every year, once at least, the tree sheds its leaves. Its fruits go down to the soil to enrich the soil. So, ये जो बात ने आइंस्टाइन जी ने बताया है, ये कुछ सुपरनैचुरल या कुछ सुपरफिशियल बात नहीं है. बात ये है कि जो तत्व है, नेचुरल प्रिंसिपल्स है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, is the core of the creation. So अगर हमें भी समाज को अच्छा तरह से हमें मैनेज करना है, हमें भी सेम तत्व को हमें फॉलो करना है. Otherwise, it is like swimming against the flow of the river. How difficult it becomes, how dangerous it becomes by undermining it. Therefore, what he says is absolutely scientific and true. Now, dearest, I think there are a number of students here in this program. I'm so happy. विद्यार्थी जी जो प्रेजेंट है, आप भी इस एक्टिविटी आज का डिस्कशन में आप प्लीज पार्ट ले लीजिए. लिखा है कि स्टूडेंट्स जॉइन डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट डिसिप्लिन्स टू अचीव सम एम्स. ऑफ कोर्स आप कुछ उद्देश्य लेकर के आप कॉलेज ज्वाइन किया है, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो भी है, वेरी गुड. टीचर्स आल्सो टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज पर द सिलेबस. प्रोफेसर तो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का है, कोई डायनामिक्स पढ़ाता है, कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाता है, कोई मराठी भाषा पढ़ाता है. फाइन, वंडरफुल. दे आर टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स. नो डिसिप्लिन इज स्मॉल और लेस इंपॉर्टेंट देन अदर्स. सभी भी सब सब्जेक्ट, सब डिसिप्लिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, क्योंकि the world can run because of different disciplines and expertise. You cannot run the whole department, the whole world only by electronics. Can you do it? Not possible. You need psychology also. No? You need mathematics. So all these different subjects, they are like different parts of a watch. Small or big, all of them. If you remove one small screw from the watch, it will stop working. So universe का, समाज को भी कार्य के लिए, अच्छा से आगे जाने के लिए, ये different subjects or different disciplines जरूरी है. All right. Now, have you ever thought what is the aim and purpose of education? We are learning different subjects. We are teaching different subjects. But what is the final purpose of education? आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए. समय कम है तो प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए. What is the aim of education? Let us see. आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कोई भाषा भी आप लिख सकता है. Very good. Thank you. Answers are coming. Holistic development, knowledge, self-development. Wonderful. और कुछ? Wonderful. Very nice. Nitin John. Yes. Become successful. Very nice. और जो आंसर्स आपने लिखा है बहुत सुंदर है, तो प्लीज आप नोट भी कीजिए, क्योंकि कुछ नया नया बातें भी आते हैं. There are new things that you are writing. So please write. Because if you want to discuss the same subject with other students or the teachers, you'll have many, points. Achieve our aims. Very good, very good. Darshani Power. Yes.
We take education to achieve the aims that we have. I hope we have an aim, because sometimes the students don't think they should have an aim. To change the world, Taslim, wonderful. In a good way, yes, to improve self. Very good. I'm so happy we are getting lots of good answers. Provide direction to the process of education. Oh my God, wonderful, wonderful. So if there is no aim, then the process of education will have no aim. Which direction it will? One day it goes to left, one day it goes to right. It will be confusion. Many places this is happening, unfortunately. Sometimes we think the aim of going to college is to complete the syllabus. Sometimes we think the aim is to give examination and to get a certificate. These are actually indicators. These are not the aims. Like milestones, that you go from your place to next city. There are some milestones which tell you these are not destinations. Improve discipline. Very good, very good. Well, you are giving very wonderful answers. Let us proceed further. Now, see what Leo Tolstoy says, the great Russian philosopher of last century. Excellent philosopher. You should read his books. He says the only purpose of education is freedom. The only method is experience. So education should make us free. And education should give us the experience. Now, please think of both these things. What does freedom mean? What Tolstoy says, and what does experience mean? Let us write in the chat box. What does freedom mean to you? When Tolstoy says the education means freedom, really, what do you understand by freedom? Okay. Good answers are coming. Shweta ji, yes, Dr. Shweta Attar says, from slavery. Okay, Shweta madam. Now, liberty. Oh, that's a great answer. Now, I want you to think, are we slaves? And if yes, we are slaves of what? That education should make us free. I agree with you. But I want you to say further, we should become free from which slavery? Exploring ourselves. Wonderful. Is it happening in the colleges to explore ourselves? Not really. We have forgotten the self in the shelf and we are just focusing on something else. Self-discipline. Thank you, Project Haji. Very nice. Free to fly over the world without any restriction. Now, I don't know what you mean by this exactly, but it is a good way of looking at it. To be free from restrictions. Now, what type of restrictions? We have to think about it. Are the restrictions always bad? Or do restrictions give us discipline? Think about it. Do things which make us happy. Thank you. That is a good answer from D'Souza ji, because many things that we do are not making us happy, but we have to do it out of force, out of compulsion. We are not free to do what makes us happy. If education is not flexible to make us happy, we are forced in a fixed frame. Independence of thought. Thank you, Dr. Diwan. See, wonderful. There are such beautiful answers. I really wish that we should have another session, Nangre Madam, only about freedom. It is not because my name is Azadi, so I like to have one session on Azadi. No, because freedom is something which is very much
necessary and something which is very much wrongly understood and not always correctly practiced. Yes, we'll go further, we'll go ahead. A great teacher, he said that the greatest freedom is freedom from self. To come out of the prison of self. एक महान टीचर ने बताया था कि फ्रीडम का सही मतलब क्या है। फ्रीडम का सही मतलब ये है कि हमें अपने आप से बाहर आना है या अपने आप से स्वतंत्र मिलना है। जो सेल्फ यानी कि स्व का जो बहुत सारे लोग अटके हुए हैं, तो उससे हमें एक स्वतंत्रता प्राप्त होना, इसका मतलब फ्रीडम है। तो हम सेल्फ से, सेल्फ को क्या बोलते हैं? स्व। स्व, हाँ, मराठी भी वही होता है ना, स्वयं, स्वयं होता है। तो हम उस सेल्फ एक प्रिजन है, जेल है, हम उसमें से we have got imprisoned, we are not free. So universal human values is the key for freedom from self, but not through only talking, through practicing. Now, when we look at the National Education Policy 2020, they explain to us what is the purpose of education. See, they say purpose of education is to develop good human beings. बस बात खत्म. Good human beings. अच्छे मनुष्य बनाने का. Then they explain what is good human being. Capable of rational thought and action. क्या होता है हिंदी में? एक स्वतंत्र विचार को सोचने की क्षमता रखना. Rational thought. Rational means not superstitious thought, based on reason. अपना जो अकल है, तार्किकता के आधार पे विचार करना. हाँ जी. Rational thought, rational action. Very often we are again doing irrational action. जो चीजें हम अमल करते हैं लेकिन वो रैशनल नहीं है, सही माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन हम लोग करते हैं, तो वी आर नॉट गुड ह्यूमन बीइंग्स. अगर हमारा सोच रैशनल नहीं है, अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी, वी आर नॉट गुड ह्यूमन बीइंग्स. अगर हमारा एक्शन प्रेजुडिस है, रैशनल नहीं है, तो वी आर नॉट गुड ह्यूमन बीइंग्स. Possessing compassion and empathy, good human beings should be compassionate, प्रेम, दयालु. एजुकेशन हमको compassionate बनाना चाहिए, सहानुभूति और करुणामय बनाना चाहिए. देखिए, compassionate, empathy. I cannot say मेरा सब्जेक्ट है mathematics, I have to teach only mathematics theorems, I have nothing to do with compassion. Can I say that? Then I will fall short of my duty. Even if I teach physics or if I teach sociology, doesn't matter. My subject should create compassion and empathy. It should create courage and resilience. साहस और लचीलापन हमारे अंदर आना चाहिए. Resilience means we continue, we don't back up, we continue, we persevere. Then thought it should be scientific temper. Scientific temper means no superstitions. यानी कि फिर उसके बाद आता है वैज्ञानिक मनोवृत्ति होना चाहिए हमारे पास. Then education should make us creative imagination. अभी imagination कहाँ मिलेगा? बस तो हमें तो ऐसा सोचता है, imagination थोड़ी टाइम है सोचने के लिए. नहीं, imagination तो खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें एक फिक्स सिलेबस से काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए. Imagination कहाँ है? So our imagination is killed. Education should increase imagination. These are, friends, universal human values with sound ethical moorings and values. Mooring क्या है? Moorings are the poles which are kept at the port. When the ship comes, when the boat comes, they tie it with a rope to the moorings. So even at night,
If a storm comes, the shape this boat is safe. It doesn't go off. If there is no mooring, if they don't fix it, then the storm can take it anywhere and even can get drowned. तो जो क्रिएटिव इमेजिनेशन यानी कि कल्पकता भी होनी चाहिए और साउंड एथिकल मूरिंग्स यानी कि जो मूरिंग का मतलब यहाँ पे सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मूरिंग्स यानी कि जो जहाज रहता है वो जब समंदर के यहाँ पे जब समंदर से अंदर किनारे की तरफ आता है तो उसको हम लोग पैक करके रखते हैं, जो रोप से उसको टाई करके रखते हैं। यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया, आप देख सकते हैं ऐसे पोल से, और जो पोल को अच्छी तरह से वो छोटी सी जो शिप है उसको एक पैक करके रखा हुआ है। तो एथिकल मोरिंग्स एंड वैल्यूज ये ऐसी चीजें हैं जो हमको इससे टाई करके रखती है, बांध के रखती है वो। तो क्योंकि जिंदगी में तूफान बहुत है, दिन में आता है रात भी आता है तूफान, तो अगर हम एथिकल वैल्यूज मोरिंग से अगर हमें टाई करके खुद को हमें बांध देगा तो हम सेफ है। जितना भी तूफान हो, we will not go anywhere. We are in the port. Safe means we remain in the port, in the right place. Then they say aim of education is excellence. It's not question of passing with 40%. No, they say it's excellence. Whatever we are, we should reach the excellent level of it. If I am a teacher, I teach in excellent way. I have to be an excellent teacher. I have to be an excellent staff member of the college. And my students should be excellent. So dear students, this is the yardstick for you. This is the standard. The aim of higher education must be to enable development of an enlightened, socially conscious, knowledgeable, and skilled nation. देखिए, बस खुद के बारे नहीं है, अभी नेशन के बारे में बताता है कि एजुकेशन की वजह से, स्पेशल हायर एजुकेशन की वजह से पूरा देश कैसा होना चाहिए? एनलाइटेंड होना चाहिए। एनलाइटेंड मीन्स मान प्रकाशित होना चाहिए, एनलाइटेंड होना चाहिए, सोशली कॉन्शियस होना चाहिए, जिससे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशली कॉन्शियस होना चाहिए। ये सब एजुकेशन का हिस्सा है। हम एक स्टूडेंट को कैसा सोशली कॉन्शियस बनाएंगे, हम खुद कैसा सोशली कॉन्शियस बनाएंगे, सोशली रिस्पॉन्सिबल बन सकता है, नॉलेजेबल एंड स्किल्ड। स्किल के बारे तो अभी तो बहुत हम सिचुएशन बहुत गंभीर है, बहुत पीछे। अभी हमारा स्किल कमीशन भी है, कोशिश करता है हमें जो भी सब्जेक्ट पढ़ता है, whether it is English language or it is social sciences or it is civil engineering, doesn't matter. All of them involve skills that we have to develop. And more important is human skills, interpersonal skills, self-analysis, thinking skills, creativity skills, ये सब human values, उसको भी skills रहता है। ह्यूमन वैल्यूज तो बस कहानियां नहीं है, बैठ करके स्टोरी सुनेगा ह्यूमन वैल्यूज बन गया। नो, नेक्स्ट आफ्टर आई फिनिश, माय कलीग्स मिसेस साइली एंड मिस्टर पारग विल टेल टू यू what is moral capability. So it is not listening to some story and you become morally capable. No, far from it. They will tell you. So the education policy says they should become skills. Uplift the people. Construct and implement robust solution to its own problems. So our students should be able to solve problems, real life problems, technical problems, social problems, moral problems, environmental problems. Dear students, the whole nation is your laboratory. It is not only the four walls of the lab when you go to the college. No. The whole nation is your laboratory. Plenty of things you can do, you can learn. And the dear teachers are your guides in the laboratory. So if our education does not go beyond the college to the society, उसमें कोई फायदा नहीं है, limited है। तो universal human values require करता है
उसको नेसेसरी है कि हमें बाहर जाकर के कुछ करेंगे। ये बाहाई एकेडमी का जो प्रोग्राम है वही बस एक्शन ओरिएंटेड है। सो देखिए, जब एम ऑफ एजुकेशन के बारे में हम सोचेंगे, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बताया है, दो चीजें हैं। नंबर वन एस्पेक्ट है पर्सनल डेवलपमेंट, वैल्यूज, एबिलिटीज, पर्सनालिटीज, करेज वगैरह वगैरह जो बताया, ट्रस्ट वगैरह, ये सब पर्सनल डेवलपमेंट में आता है। That's the aim of education. And that's where value education comes, universal human values come. दूसरा है contributing to development of the nation and society. ये दो चीजें एक साथ में होना, ये दो चीजें क्या है, हमारा जिंदगी का उद्देश्य है। वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य है, हम वैल्यू एजुकेशन एक ऐसा कुछ चीजें नहीं कि विद इन क्लासरूम खत्म हो जाएगा, नहीं, it goes out to the society. Every year, the Bahai Academy publishes the book summary of the projects that the students have done for value education in the society. Students engineering का students हो सकता है, medical का हो सकता है, management का हो सकता है, commerce का हो सकता है, कुछ भी branches, they do it. Education, all of them. So, to be successful in this development that we said, both of them personal as well as social, तीन टप्पा रहता है, तीन स्टेप्स है। नंबर वन नॉलेज, तो हमें नॉलेज प्राप्त करना चाहिए, जानकारी, that is the first thing. Without knowledge we cannot go ahead, so that is the basis. But if we stop there also, we have not gone anywhere. Second, knowledge should help us to increase our volition. वोल्यूशन हिंदी में क्या होता है? इरादा और या संकल्प। बिल्कुल, इरादा है, इच्छा शक्ति है। तो मतलब रियली हम उस नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इससे इरादा होता है। टू इंप्लीमेंट व्हाट आई हैव लर्नड, नॉट ओनली राइट एग्जाम पेपर बट टू पुट इनटू एक्शन, ऐसा इरादा होना चाहिए। और इरादा होने के बाद में बैठ करके सो जाने का, ऐसा होता है नहीं। इरादा स्ट्रांग होने के बाद में एक्शन, अमल पे लाना चाहिए, तब हम खुद ट्रांसफॉर्म हो सकता है और हम समाज को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो ये बाहाई एकेडमी प्रोग्राम है, ये तीन टप्पे के बारे में है। सो वी से एक्सटेंशन एक्टिविटीज, वो तो तीसरा टप्पा है, एक्शन है। तो उसका पहले नॉलेज है, नॉलेज पर्सनल स्टडी से, डिस्कशन के थ्रू से होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग से होता है, देन इरादा पैदा होता है, एंड देन प्रैक्टिकली we do beautiful, can do beautiful projects, and those projects gives you real happiness. So well, actually there is a lot more to discuss, लेकिन अभी समय कम है, लेकिन तो मैं 1 मिनट से कंक्लूड कर दूंगा, तो बाद में मेरा जो कलीग्स है, दिस मिसेस साली एंड मिस्टर फरक सर ने, उन्होंने कंटिन्यू करेगा। तो ये जो दो चीजें हैं, पर्सनल डेवलपमेंट, उसका जरूरी क्या है कि पहले हम खुद को पहचानना चाहिए। वी शुड नो आवरसेल्व्स। अगर if I don't know myself, I'm the greatest loser. The greatest loss is for a person who spends his life without knowing his own self. Why? Because each one of us have got many things within us, many blessings, many talents, many powers. Intellectual powers are there, moral powers are there, spiritual powers are there. Many powers, limitless. Each one of us is like a mine of gems. एक हीरा मोती का खान है। हम सब एक व्यक्ति जो है, whether हम विद्यार्थी है या टीचर है, कोई फर्क नहीं है। एजुकेशन इस खान को खोल के जितने भी हीरा मोती है बाहर निकलना चाहिए। वो खान के ऊपर में एक लॉक नहीं लगाना चाहिए, हमेशा के लिए लॉक रहेगा। So methodology should be different in education so that those gems come out. Then education can polish it.
लेकिन शुरुआत में पर्सनल डेवलपमेंट के लिए पहले खुद को पहचानना चाहिए। तो इसलिए बाहर के प्रोग्राम में एक्टिविटीज रहता है खुद को पहचानने के लिए। स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम इज अबाउट नोइंग oneself। और अगर हम दूसरे कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, हमारा फैमिली के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, हमें केपेबल होना मांगता है, अपना हमें सक्षम होना चाहिए। We should increase our capability. So how do we increase it? Now my colleagues will tell you. Because to increase capability, it does not happen only with increasing knowledge. It does not happen only with memorization. I can even pass my, degree with 99.99% with O, and I can remain incapable. Yes, it is not how much percentage I score which makes me capable. It's more than that. And that should come in our education. That should become part of the process of education. So education in universal human values, the aim is capability. I hope later on you can visit the Bahai Academy website and see what are the courses available there and what are the contents there and what is the process of becoming capable. And I hope that many of you will be able to somehow, whenever it is possible, to really do some of these courses, which are there for the students, for the teachers, for the admin staff members, for everybody, They're non-commercial courses, of course, very minimum fees are there. But the aim is transformation, which the National Education Policy has spoken about. Thank you so much. It was lovely. Thank you very much for your active participation in the